sake of transparency and clarity, so we will just refer you to the legal provisions which have already been set out and approved by the Privatization Commission for purposes of this transaction. So the relevant provisions are in the instructions to bidders, which was publicly circulated to all of the pre-qualified parties. The two relevant sections we will direct you to are summarized on the screen for your ease of reference. I'll just read them out now. We are in round one, so section 6.4.1 of the instructions to bidders. On the bid date, the bidder is to submit his bid in the sealed bid form and deposit it in the glass transparent box, which has already occurred earlier today, and the box is still here in front of you. Subsequently, there's a meeting of the PC board and the Cabinet Committee on Privatization, following which we are here starting the second phase of the process today, which will be for opening of the sealed bids. Once the bid is opened, I will request a volunteer to come and open the sealed bid form, and then it will be checked quickly by the FA team and the PC to ensure that there are no conditions attached to the bid, and it has been properly and duly signed by the authorized representative of the Blue World Consortium. And then we will request the Blue World Consortium authorized representative to sign the record sheet. Next slide, please. ये कुछ खास provisions हैं just to highlight for you for the sake of transparency. In the event of a single bidder, which is the case today, so the instructions to bidders lays out a specific process to be followed. If the bid after opening, the bid price is less than the minimum expectation of the Privatization Commission, then the Privatization Commission, in its sole and absolute discretion, shall have the right to request the bidder, shall have the right to determine whether it wants to continue the bidding process, to modify it or cancel it, or Privatization Commission can request such bidder to match its bid price with the minimum expectation. ये उस सूरत में होगा if the bid price is less than what is the minimum expectation of the Commission. If the Privatization Commission requests the bidder to match its bid price with the Commission's expectation, and such bidder either declines the request, or such bidder submits a revised bid, which is higher than their original, but still lower than the minimum expectation of the Privatization Commission, or the bidder submits a revised bid price which is equal to or higher than the minimum expectation of the Commission, then in each of these scenarios, the bidding process will stop for today, and the Privatization Commission will take the bid price to the competent forums for approval, including the Federal Cabinet. The approval from the Federal Cabinet, as per the Privatization Commission ordinance and the instructions to bidders, it's very clear that it is a discretionary approval, so it is up to the Federal Cabinet whether or not they would like to declare the bidder, the sole bidder, as the successful bidder, and thereby awarding them the privatization. So that is at the sole and absolute discretion of the competent forums, and that will take place subsequently after the process today. So with that, that concludes the overall summary for you, for your reference and for transparency on how it will be conducted. Now, I'll hand it back over to Mr. Basit from the Privatization Commission. Thank you, Ji. Moving on to the next step, I request a volunteer from the audience to step forward to open the sealed bid. आ जाएं, दें ज़रा माइक दे दें इनको. If you can, for the information of the public, state your name and profession, please. Ji. Assalamu alaikum all of you. My name is Kamran Raja. I am representing the Pakistan Times as a chief editor here, and today is a historic moment, so that's why I am here as a volunteer. So I think I should start this. चलो एक मिनट. If we can open the box. एक मिनट. I can witness it. So एक मिनट. If you can kindly flag it to that camera.
I request Mr. Awaz Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. इनको दें, ओपन कर दें, इनको दें. You have to show it to the camera, sir, please. So here is the seal bit. Which is open, and kindly hold it so that the frame can be captured. Does this conform to the instructions of? J. Raja साहब को दे दें. I request. रोस्टर पे आगे रीड करते हैं. नहीं, वहाँ पे mic है. We have the mic over there. We just have to confirm that if this conforms to the instructions as outlined in the ITB. ठीक है जी, ठीक है जी. एक मिनट दिखाते हैं, एक मिनट. इफ यू कैन रीड इट आउट सर फर्स्ट. सर इसको ज़रा अब बोल दें ऑडियंस के लिए. इफ़ यू कैन एंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो प्लीज़. नहीं जी, आपने यू जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज. द टोटल बिड प्राइस. Our bid price for the equity stake is as follows. Pakistani rupees 10 billion only. ये फिगर्स में 15% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA HCL shares amount, and 85% of the bid price is the PIA CL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the bid documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express agreement. Okay, now I'm showing again this. Request get a record sheet. नहीं कर रहे, वो लेके आ रहा है. I know. Thank you, Ji. I now request the authorized representative of the Blue World Consortium to kindly sign the record sheet. From the Privatization Commission side, I would request Mr. Kamran Farooq Ansari, Director General INT/PNU, to kindly step forward and sign the record sheet. I now request Mr. Naveedur Rahman, Financial Consultant, Privatization Commission, to step forward and kindly sign the record sheet. From
The Privatization Commission will now communicate the minimum expectation price to the bidder pursuant to the provisions of the instruction to the bidder document, and will give them 30 minutes time to consider, and will reconvene here at 7:10. So I request the FA team and Mr. Awaz to kindly share the same with the PQBs, with the Blue World Consortium. Zishan Sahab. ڈالنا ہو گیا. We are going to display the minimum expectation price on the screen ji, for the information of the audience also, and also for the pre-qualified bidder. So the PC's minimum expectation price is 85030 million Pak rupees. Billion, 85.03 billion. So we'll give them 30 minutes and we'll reconvene at 7:15, but I request the guests to kindly be seated around 7:10. Thank you. اس وقت اسلام آباد میں پی اے کی نجکاری کے حوالے سے تقریب جاری ہے. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی 10 ارب روپے مالیت کی بولی اوپن کی گئی ہے اور بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے نجکاری کی شرائط کو تسلیم کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو ریزرو پرائس رکھی گئی تھی کابینہ کی نجکاری کمیٹی کی جانب سے, اسے بھی اب ڈسپلے کر دیا گیا ہے, اوپن کر دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت 85,030 ملین پاکستانی روپیز کی یہ ریزرو پرائز, جو کہ اگر بلینز میں بات کی جائے تو 85.03 بلین روپیز بنتے ہیں, جو کہ ریزرو پرائز اوپن کی گئی ہے. بڈ پرائز جو کہ بلو ورلڈ کنسورشیم کی جانب سے اس وقت اوپن کی گئی ہے بولی کو, وہ 10 ارب پاکستانی روپیز بنتے ہیں. بالکل, اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے یہ تقریب جاری ہے. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی 10 ارب روپے مالیت کی بولی اوپن کی گئی ہے. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے نجکاری کی شرائط کو بھی تسلیم کیا. نجکاری کمیشن کی طرف سے 85 ارب روپے کی ریزرو پرائس مقرر کی گئی اور اس وقت 10 ارب روپے مالیت کی بولی اوپن کر دی گئی ہے. یہ بھی بتائیں آپ کو کہ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے نجکاری شرائط کو بھی تسلیم کر لیا. نجکاری کمیشن کی طرف سے 85 ارب روپے کی ریزرو پرائس مقرر کی گئی تھی اور بلو ورلڈ کی جانب سے, بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی جانب سے 10 ارب روپے مالیت کی بولی اوپن کر دی گئی ہے. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے نجکاری کمیشن کی شرائط کو بھی تسلیم کیا. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی جانب سے سنگل بڈ جمع کرائی گئی. 6 کنسورشیم تھے اس سے پہلے, لیکن کچھ شرائط کی وجہ سے باقی کنسورشیم نے اس بڈ میں حصہ نہیں لیا اور صرف بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے اس بڈ میں حصہ لیا گیا. آج دوپہر 1:30 بجے یہ بولی جمع کرائی گئی تھی اور بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے پی آئی اے کے 60% شیئر خریدنے کے لیے بولی جمع کرائی. بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی بھی دیگر کنسورشیم نے نیلامی کے عمل میں حصہ نہیں لیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر سیال سے. جی عامر, یہ اس وقت تقریب جاری ہے اور غالباً آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ ریکنوین کر لیں اس چیز کو اور اس کے بعد دوبارہ سے آ کے معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے. آپ ذرا پروسیس ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا اور یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا.
और देखें, जो ये बोली खोलने के अमल से पहले बताया गया था कि जो बोली दी गई है बिडर की तरफ से, वो अगर रिजर्व प्राइस से कम हुई तो उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसका अख्तियार होगा कि वो बिडर को जो है बोली बढ़ाने के लिए के, और अगर उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा तो आधे घंटे का टाइम दिया गया है। इसमें जो है जितनी रिजर्व प्राइस रखी गई है 85 अरब रुपए की, उसे मैच करना होगा। अगर वो मैच नहीं करते तो फिर ये मामला जो है वफाकी काबीना के पास जाएगा और वफाकी काबीना फिर इसका हतमी फैसला करेगी। ताहम अभी आधे घंटे का टाइम दिया गया है बिडर्स को कि वो इस पे बोली को मैच कर, रिजर्व प्राइस को मैच करने के लिए जो है उस पे आगाह करें कि वो मैच करना चाहते हैं या वो बोली से शिरकत नहीं करेंगे मजीद। जी अच्छा आमिर ये भी बताइएगा, क्या ये तमाम प्रोसेस आज के दिन में कंप्लीट होना है? जी, ये बोली का जो अमल है ये तो आज के दिन में मतलब इसे कोशिश की जाएगी मुकम्मल की जाए। ताहम अगर ये इत्तेफाक नहीं होता बोली पे तो इस मामले को फिर वफाकी काबीना के पास जाया जाएगा और वफाकी काबीना जो है उस मामले को फिर दोबारा से कमेटी के जरिए हल करने की कोशिश करेगी। बिडर्स को कहा जाएगा कि वो अपनी बोली को बढ़ाएं और इसे इसके करीब लाएं, ऐसे मैच करें। हतमी फैसला वफाकी काबीना का होगा। ठीक है आमिर, आप साथ ही रहेगा। कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। कामरान, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 10 अरब रुपए मालियत की बोली ओपन की गई है। जो हुकूमत की जानिब से जो बिड दी गई थी वो 85 अरब रुपए की है। अब क्या लगता है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये उनके नाम ही बोली रहेगी या अभी मजीद इस पे बहस होगी या मजीद इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा? जी देखिए, ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेस में है और उनको जो प्रोसेस जो इसका बताया गया था निष्कारी कमीशन की जानिब से इस बोली खोलने से पहले, बोली खोलने का जब अमल था उससे पहले जो प्रोसेस बताया गया है उसके मुताबिक उन्हें बताया गया था कि पहले आपकी जो बोली दहिंदा की कीमत है वो जो ऑफर उसने लगाई है पहले उसको ओपन किया जाएगा, जो कि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की मालियत की बोली जो है वो ओपन की गई। और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि अब जो रिजर्व प्राइस रखी गई है यानी निजकारी बोर्ड की जानिब से और कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन की जानिब से जो कम से कम कीमत रखी गई है PIA कॉरपोरेशन की, वो उसको डिस्क्लोज किया गया और वो बताया गया कि उसकी मालियत जो है वो 85 अरब और 3 करोड़ रुपए बनती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि अगर बोली दहिंदा जो है वो कम से कम मालियत से भी कम की बोली लगाएगा तो ऐसी सूरत में उसे एक बार मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो ऑफर है उसको बढ़ाए। इसीलिए अब 30 मिनट का वक्फा दिया गया है और जो उनको ये इसको दोबारा कंसीडर करने के लिए, अपनी बोली को दोबारा रिकंसीडर करने के लिए उनको मौका दिया गया है कि वो इस बोली पर कितना मैच करते हैं और किस हद तक आगे आते हैं। और इसीलिए अब जितने भी मामला है ये इसमें आधे घंटे के बाद जो है वो अपना जवाब लेकर ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो अपना जवाब निजकारी कमीशन को देगा और उसके बाद फिर ये मामला चलेगा। ये आज भी मुकम्मल हो सकता है और ये प्रोसेस अगर इसको डेफर किया जाए, अगर ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है चूँकि वो वाहिद बोली दहिंदा है इस पूरे निजकारी के प्रोसीजर में, तो इसमें अगर वो ज्यादा वक्त चाहें तो वो अब आज की बजाय वो आगे का भी वक्त जो है वो ले सकते हैं और निजकारी कमीशन जो है वो इसको आज की जो कार्रवाई है उसको इस बिना पर मौखर कर सकता है कि एक बोली दहिंदा ने इसके लिए वक्त मांगा है रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा कामरान, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो सिंगल बिडर है इसका और ये बोली भी अभी कुछ देर पहले ओपन कर दी गई है। 30 मिनट का वक्त दिया गया है कि इसमें कुछ मुशावरत की जाए और साथ ही साथ वो जो 85,030 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की जो रिज़र्व प्राइस जो है वो ओपन की गई है, उस हवाले से भी जो डिफरेंस है उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए इसका प्रोसेस, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का प्रोसेस कितना लंबा होगा, चूँकि हम देख रहे हैं कि एक ये लेंथी प्रोसेस है, कुछ मजीद चीज़ें जो हैं वो अभी तय होना है। निजकारी कमीशन की तमाम शराइत को ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम पहले ही तस्लीम कर चुका है। जी देखिए, जो हैंडिंग टेकिंग है वो तो उस वक्त होगी जब ये खरीदो फरोख्त का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अभी चूंकि ये सेकंड स्टेज में है जहां पर ये होता है कि बोली खोली जाती है और जो रिजर्व प्राइस है जो कि हुकूमत ने मुकर्रर की होती है उसको ओपन किया जाता है और उसमें जो फ़र्क हो, यानी बोली दहिंदा ने अगर रिजर्व प्राइस से कम कीमत लगाई हो किसी भी एंटिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी सूरत में उसको वक्त दिया जाता है। एक बोली दहिंदा होने की सूरत में उसको वक्त दिया जाता है कि आप अपनी जो
जो बिड है उसको रिकंसिडर करें, आपने जो ऑफर लगाई है उसको रिकंसिडर करें। इसी के लिए अभी ये फौरी तौर पर 30 मिनट का वक्त दिया गया है। जो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के हुकाम हैं, जो उनके अहदेदारान हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्फे में यही मकामी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं और वो इसी के ऊपर सलाह मशवरा किया जा रहा है कि इसको किस अंदाज में रिकंसिडर करना है। और मैंने जैसा कि बताया कि इससे पहले जब प्रोसीजर बताया जा रहा था निजकारी कमीशन की जानिब से, तो उसमें ये बताया गया था कि इसको अगर आज ये मुकम्मल नहीं होता या आज रिकंसिलिएशन जो है वो नहीं होती फरोख्त करनंदा में और खरीद करनंदा में, तो ऐसी सूरत में इसको मौखर भी किया जा सकता है और मजीद वक्त दिया जा सकता है बोली दहिंदा को इसकी रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा कामना, जैसे आप बता रहे हैं कि मजीद वक्त भी दिया जा सकता है बोली दहिंदा को रिकंसिडर करने के लिए जो प्राइस है, लेकिन जो निजकारी कमेटी ने रिजर्व प्राइस दिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपस में तय करके जो निजकारी कमेटी की जो प्राइस है उसको नीचे लाया जाए? जी, ये बिल्कुल ये वाली ऑप्शन ओपन होती है, क्योंकि ये दोबारा मामला जो है, अगर बोली देखिए एक ही बोली देने वाली जो है वो कंसोर्शियम है, एक ही पार्टी है, एक ही बोली दहिंदा है, अगर वो भी अपनी बोली से कम जो कम से कम जो मालियत जो रिजर्व प्राइस है, अगर वो भी उससे कम की प्राइस देगा तो ऐसी सूरत में तो फिर कोई खरीदार नहीं होगा मार्केट में। तो इसलिए जो एक ही बोली दहिंदा है उसी के साथ निगोसिएशन जो है वो चलेंगे और फिर ये जो भी मामलात होंगे इसको कैबिनेट जो निजकारी बोर्ड है उसके सामने इसको रखा जाएगा, उनसे मंजूरी ली जाएगी और इसी तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो है उनके पास ये मामला रखा जाएगा कि इसमें इस सारे अमल में सिर्फ एक बिडर ने बोली दी थी और वो भी जो कम से कम रिजर्व प्राइस है उससे कम की बोली है। तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है अपनी रिजर्व प्राइस को यानी जो कम से कम प्राइस है उसको मजीद उसमें कमी लेकर आ जाए। अच्छा आमिर साहब, आप ये बताइएगा, जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ हमें पता है कि 1 महीना पहले ये बिडिंग होना थी, लेकिन उसको 1 महीना डिले कर दिया गया। सितंबर में इसको होना था लेकिन 1 महीना डिले कर दिया गया। हुकूमत की अभी तक इसमें कितनी संजीदगी आपको नज़र आई है? और काबीना की निजकारी कमेटी की बात कर ली जाए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो कि इस तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस हवाले से उनकी क्या तैयारी थी और उनकी कितनी संजीदगी आपने देखी इसमें? देखिए ये जो मामला है तो काफ़ी संजीदा था और ये हुकूमत जो है इसको काफ़ी संजीदगी से ही करना चाहती थी, लेकिन आज जो ये इतना अहम इवेंट था इसमें ना वजीर निजकारी यहाँ पे हैं, ना जो वजीर ख़जाना है, ना जो नायब वजीर आज़म हैं, वो सारे बाहर हैं। तो ये जो तकरीब थी इसमें तो सब मतलब वफाकी वज़रा को तो होना चाहिए था और ये बड़ा अहम मामला था और ये जो IMF के प्रोग्राम का भी एक अहम जुज़ है निजकारी, और ये अगर निजकारी होती है PIA की तो ये बाकी जो सरकारी इदारों की निजकारी है उन्हें तेज़ करेगी। तो अगर इस निजकारी को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो बाकी निजकारी प्रोग्राम में भी बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी का और इन्वेस्टमेंट का फ्लो लेके आएगी और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक इदारा है। इसे अगर हुकूमत जो है बेच देगी तो हुकूमत का नुकसान कम होगा। और हमने देखा है जो खित्ते में बाकी भी सरकारी एयरलाइंस बिकी हैं वो मुनाफा बख्श तरीके से नहीं बिकी, उस पर भी हुकूमतों ने अपने जो लॉसेस को कम करने के लिए निजकारी को प्रेफरेंस दी है और उन्होंने निजी शोबे के हवाले की है। तो PIA की जो रिजर्व प्राइस रखी गई है वो खासी ज़्यादा रखी गई है। जो बिड दी गई है वो खासी मुनासिब थी, लेकिन अब बिडर को कहा गया कि वो अपनी जो बिड बढ़ाने के लिए जो है टाइम उन्हें दिया गया है कि वो बिड को बढ़ाएं, और क्योंकि इसमें जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हैं। 60% शेयर्स हैं जो हैंड ओवर किए जाएंगे सक्सेसफुल बिडर्स को, उसने नए तैयारे लेके आने हैं। 60% शेयर्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। आमिर सयाल हमारे साथ मौजूद थे, कामरान खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की 10 अरब रुपये मालियत की बोली ओपन की गई है। अब तक के लिए इतना है।